हेलो। ओह, सतोशी हमारे साथ है। Yeah, let's start with the Satoshi. Let's start with Satoshi, our 43rd episode. Yes, Some 43rd episode. Welcome everyone. Today there are 3-4 topics जो हम डिस्कस करेंगे. The first thing being the recent budget. Yesterday का जो निकला था इंडिया का बजट, उसमें क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी बात हुई है. We will focus on that. We'll talk about that. There's one specific thing. Apart from that, there has been no change. 30% तो है ही, 1% TDS तो है ही, which was not surprising. We are not talking about the regular tax relief, which is up to 12 lakh आपको नहीं देना है and all that. We will not get into the intricacies of it. We are just focusing on cryptocurrency related stuff. In addition to that, बहुत सारा tariff war चल रहा है and it has begun. And उसके चलते क्या क्या implications हो रहे हैं, that also we are seeing in real time. So, and what is the role of Bitcoin in that? How is it being played? वो देखते हैं. So that's how we want to begin our show. There are a couple of interesting interviews that we have been working on, and hopefully you'll be seeing that in a couple of in the following days. And हमारे show का pattern थोड़ा change होगा in the coming days. So for those who are interested, please like, share and subscribe the channel, and आपको और regular देखने को मिलेगा, because this is from the personal feedback that we've received. Some of them are extremely vocal about how they like the content and how they want it to be digestible. तो इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग frequency बढ़ाएंगे and we will reduce the timing. So you'll see, fortunately and unfortunately, more of our faces in the week. तो उसका देखते हैं. भाविक, आप बताओ कैसा चल रहा है? What is happening? things are getting crazier, but इससे पहले कि जो भी गाइस सब लोग आ रहे हो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो. अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. एल्गोरिदम को मैसेज जाता है तो जिससे लोगों तक पहुंच सकता है. और वैसे जनरली आप देखोगे तो सारे जो लाइक सेंट्रलाइज सिस्टम है वो कोशिश करते हैं कि अच्छी जो नॉलेज वाली बात है वो ज़्यादातर लोगों तक ना पहुंचे, जो प्रोपेगेंडा उनके वही पहुंचे. तो आप देखोगे तो मुझे 2 महीने पहले मेरी एक बिटकॉइन की एक चैनल थी, वो भी वीडियो मेरी डाउन ले गई और चैनल बंद कर दिया गया मेरा. सो इफ़ यू रियली लाइक दिस कंटेंट देन आप शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड वी आर स्पेसिफिक बिटकॉइन ओनली, बिटकॉइन ओनली. बट इसका मतलब नहीं कि बिटकॉइन अलावा कुछ बात नहीं करेंगे, क्रिप्टो और बाकी कॉइन की बात नहीं करेंगे फालतू की, बिकॉज वो इट इज़ अगेंस्ट द बिटकॉइन इथोस, इट इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम. सो जो फ्रीडम के रिगार्डिंग चीज़ है सारी, फ्रीडम, इंडिविजुअल चॉइस, उस पर बात करते हैं. सो या लेट्स स्टार्ट दिस विद बैंग. Cool. तो स्टार्ट करते हैं with our देसी डैशबोर्ड. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1 Bitcoin is almost 92 lakh rupees, and premium at the exchange level is 6.31. काफी quote unquote dip and crash हुआ था in the recent 2 दिनों में. It reached up to 99,000 yesterday, और आज सुबह rather, and now it's back up to 100,000. So it's hovering between 99,000 and 106,000. So for those who are very worried, this is extremely normal. And ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा commotion हुआ है. And this, of course, there have been global things जिसके कारण this has reduced quite a bit. And that is mainly because of the US threatening to impose tariffs and taxes on the other G7 or G20 nations. We'll cover that. So as expected, 100 rupees buys you almost 1,000 satoshis. And coming to the blockchain, rather the time chain, ये हो रहा है. So what we mean by this is, बहुत सालों बाद, like after 2021 if I'm not wrong, we are seeing इतना low fees on the Bitcoin time chain. Now इसके कई सारी implications भी हैं, but it's good for those who want to settle on chain. And miners का इसमें थोड़ा temporary घाटा है, because they won't be earning from transaction fees. But sure, I mean, they can keep doing their work, and जिसको block मिला, they still get 3.125 Bitcoin. So that is intact. There's no change in that. Transaction, obviously, क्योंकि volume कम हो गई है, and there could be many reasons for this. There is no one fixed reason कि हाँ इसी की वजह से होगी. Maybe people are not transacting much on Bitcoin, the base layer, and it's totally fine in my opinion.
दिस इज अ टेम्पररी ट्रेंड. एक टाइम पे अगर आप देखोगे 2022 में इतना बुखार चढ़ा था बिकॉज ऑफ ऑर्डिनल्स एंड अदर स्कैम थिंग्स, इसलिए द स्पेस ऑन द चेन वाज एक्सट्रीमली हाई, लाइक उसकी डिमांड ज्यादा थी एंड देयर वर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन फील्ड. सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर 200 सैट पर वी बाइट तक चला गया था फीस. एक्चुअली मोर 50 तक गया था, मैंने देखा है. हाँ, But that was people will pay बिटकॉइन है, किसी ने आधा बिटकॉइन तक पे yes, फीस yeah. किया है. We also did अभी live stream किया विद हाविंग के टाइम पे. करेक्ट. अभी देखोगे तो इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट. So this is a great time for those who want to consolidate their UTXOs. UTXOs are small chunks of Bitcoin. यहाँ वहाँ अगर आपने छोड़ दिया तो उसको जमा करके एक जगह पे ले आएगा. And Bhavik, what do you have to say इस मामले में? Like, what do you think implications are? अच्छा है, बुरा है, क्या बोलते हो? एक अच्छा बुरा कहने वाले तो हम कौन ही होते हैं ना, बिकॉज इट इज अ फ्री मार्केट. सो लाइक पता नहीं कितना फ्री है. लाइक माइनर्स का काफी, इसमें जो माइनर्स का सेंट्रलाइजेशन भी है उसका भी काफी इम्प्लीकेशंस रहेंगे. एंड पीपल आर यूजिंग लाइटनिंग्स, लिक्विड, आर्क भी आ रहा है. सो फीस अभी तो फीस कम है, बट ये फीस कम है, बट मुझे नहीं लगता कि देयर विल बी टाइम कि जब कांस्टेंट हाई फीस रहेगी. सस्टेन हाई फी प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा. व्हेन राइट नेशन स्टेट्स अभी आएंगे इसमें. सो अभी काफी ना, आपने वो डिड यू सी दिस ल्यूक डैश जूनियर का वो पोस्ट ना अबाउट माइनिंग की, जो पूल में जो माइनिंग कर रहे हैं सारे फाउंड्री वगैरह. जस्ट गिव मी अ मिनट. या तो पूल में जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक आपके पास कुछ हैश रेट है, तो आप इंस्टेड ऑफ माइनिंग सोलो, इंस्टेड ऑफ माइनिंग ऑन ओशियन, लोग क्या कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, वो सीधा जस्ट पूल पे माइन कर रहे हैं जो सेंट्रलाइज पूल है बिटमेन के एंड पूल फाउंड्री, और उसमें उनको सीधा कांस्टेंट लाइक रिवॉर्ड आ रहा है. बट ल्यूक का कहना है स्टैटिस्टिकली कि ये उनका लाइक 10 to 20% वो उससे भी ज्यादा लॉस में कर रहे हैं. सो इसका फीस पे काफी असर दिख रहा है मुझे. सो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रलाइजेशन है, तो इसका काफी ना काफी कुछ तो असर रहेगा. देखना पड़ेगा क्या है. वील हैव टू थिंक अबाउट इट. But the last few weeks ओशन के लिए बहुत अच्छा है. There was one period like in 24 hours they had almost found 4 to 5 blocks, which is great for a pool like 24 hours में, है ना? Yeah. आपको प्रोक्सी वो भी पता है ना कि जितना हैश रेट है उतना दिख रहा है उतना है नहीं, लाइक वही डबल कुछ तो चल रहा है माइनिंग में. ये नहीं पता. ल्यूक एंड बिटकॉइन मैकेनिक्स उनका भी कहना है कि लाइक ओशन का इतना ही हैश रेट है, देन उस तो भी वो लोग 30 to 40% मोर ब्लॉक्स माइन कर पा रहे हैं. तो मतलब कि हैश रेट जो है वो रिग्ड है, उसका कहना है बिटकॉइन मैकेनिक्स का. या वो कितना सच है, कितना कंस्पिरेसी. लाइक जैसे आपने बोला 24 आवर्स में 4 से 5 लोग आए, अगर आप 30 डेज में देखते हैं, सो उनके जो ओड्स है वो 20-25% हायर है. सो ऐसे कैसे हो सकता है? तो तभी हो सकता है जब रियल हैश रेट जितना दिख रहा है उससे 20% लो हो. तभी पॉसिबल है ना. इफ या और द लॉन्ग रन. No, because we don't know the exact mechanics of the internal things ना. मतलब अगर आप देखोगे तो एंटमेन के बिटमेन के बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड उनका ही हार्डवेयर चलता है इन द मार्केट, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट प्रोजेक्ट दे कैन बी रनिंग माइनर्स ऑन देयर होम टर्फ चाइना में, एंड दूसरे जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं. एंड जो बिटमेन का जो फाउंडर था जिहान वू, है ना, सो ड्यूरिंग द ब्लॉक साइज वॉर्स वो भी थोड़ा लार्ज ब्लॉक की साइड ज्यादा उसका बायस था. सो ही डिडंट केयर अबाउट बिटकॉइन, लाइक उसको समझ नहीं आता था बिटकॉइन क्या है वगैरह. लाइक ही उसको प्रॉफिट समझ में आता है शॉर्ट टर्म, ही डजंट अंडरस्टैंड मच. सो वो लाइक ही कैन डू, वो कर सकता है, ये सब रिग करने की कोशिश कर सकता है. बिट थोड़ा वो टेक्निकल हो गया ये, बट लाइक दिस फॉर us. And this does not mean that there is any fault or issues with Bitcoin. The time chain itself, वो चल रहा है, there is no issue there. ये थोड़ा मोड़ा tussle होता ही रहता है between large organizations and the upcoming ones, because it's a free market. So सब लोग अपने voice करेंगे opinions. Moving on to the next thing. This is extremely exciting for those who are graduating and about to graduate in 2025. So Summer of Bitcoin is a internship program, and this is a global internship program जहाँ पे आप
contribute कर सकते हो to Bitcoin open source projects and Lightning open source projects. And इसमें आपको क्या मिलेगा? Like you get your paid internship, you get learning bootcamp, Bitcoin fundamentals को and the best part is hands-on mentorship मिलती है from the active Bitcoin developers who are working, developers and designers. So there are 2 tracks to this. There's development track and there's design track. And I think last 1 या 2 साल पहले तक the stipend was up to $3,000 and now the stipend is increased up to $6,600. Obviously, I you think get paid in Bitcoin. Yes, that is there. And this is upon successful completion of the internship, obviously. And उसके बाद में there is, क्योंकि अगर आप actively contribute करते रहते हो, so you are actually in constant touch with the people who are working on the project. And उनको अगर आपका काम अच्छा लगा, they will obviously absorb you and you will have a potential full-time job. And there will be grants का opportunity as well. So all in all, for the students who are graduating, this is a gold mine, I'd say. And please apply, है ना? because Like this जो इसमें started- आता है वो yes, जो इसमें आता है वो like I have seen people जो Summer of Bitcoin से जुड़े हुए हैं वो उनकी life their life has improved a much क्योंकि वो Bitcoin को समझ जाते हैं ना अच्छी तरह and फिर Bitcoin की दुनिया में आ जाते हैं. True. So please apply if you are like please explore this space. Yeah. The application started yesterday and 15th तक चलेगा, so you've got less time. So whoever, if you want to pass this information around आपके चाहितों के लिए, please do so, who are graduating. So it'll be much beneficial to them. ऐसे नहीं कि you cannot force anyone to do this, but it's an exciting opportunity to learn about Bitcoin. Moving on, yesterday का budget session हुआ था, and obviously there are a lot of tax implications जुड़े हुए हैं. There's up to 12 lakhs का वगैरह वगैरह चल रहा है. Cryptocurrency के लिए there are 3 main things. 30% tax is intact, 1% TDS is intact. यहाँ पे there's one more clause added to the tax structure where it says people who are transacting VDAs will be kept on par with money and gold. Basically, if you have cryptocurrency and you are not disclosing it, and agar on a regular search you are identified and aapke like is there's some sort of investigation and there's some sort of searches, and us time pe agar aapko disclose hua that you are holding such cryptocurrency, you may face up to large sums of tax. It won't be capped at 30%. उससे ज़्यादा भी हो सकता है on the duration of the holding. So अगर आपका 1 साल से आप undisclosed cryptocurrency hold कर रहे हो, उस पे tax लग सकता है. And in addition to that, the following years का penalty भी लग सकता है. So that's what the main amendment was done for this year, I guess. इसमें लिखा है virtual digital assets have been brought with the ambit of undisclosed income for the purpose of block assessment. Block assessment is a key word here because this was not there before. So ये start हुआ है yesterday से 1st Feb 2025. So yeah, this is the latest update. Yeah, in terms of taxation, there's nothing much apart from this for this year, at least. Any? This is bad development. Yeah, any bad, bad या good again. इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग. कुछ नहीं कर सकते, ये होना ही है, कभी ना कभी तो करेंगे. और the main reason for गलत this जगह is कर रहा है, गलत जगह कर रहा है गवर्नमेंट ना, फालतू का कर रहा है. The main reason for this उनका करना for them to do this is to reduce the currency aspect of it and to increase the asset वाला role. Basically seizure के लिए they are pushing, जैसे gold के लिए कर सकते हैं obviously, and for the currency aspect which is free flowing, which will not happen in India, I'm sure. And these people, the government has a treaty with other nations by 2027, I think वो active होगा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि all the information will be shared with all these countries to stop large scale tax evasion and money laundering वगैरह वगैरह. Coming forward, so Nayib Bukele ne, he faced a lot of resistance when he went on the Bitcoin standard for his country, El Salvador. And US के एक senator है Bob Menendez, who was extremely against El Salvador adopting Bitcoin.
तो फिलहाल Jan 30th को he was sentenced to 11 years in prison for taking bribes in gold and cash. So नाइब ब्यूकेले ने ओपन स्टेटमेंट निकाला है कि people who are accusing us of corruption कि बिटकॉइन यूज होता है for money laundering and corruption, they itself have been jailed because of cash and gold. And this is a common pattern. अगर आप देखोगे, अगर न्यूबीज को अगर कंफ्यूज करना है तो lot of people who are aware of Bitcoin, they will tell कि नहीं, it is very shady place, यहाँ पे सिर्फ corruption होता है, यहाँ पे सिर्फ black money का dealing होता है. That's not true. Officials in reputable and respectable positions also get caught through your gold and cash. So this is something which needs to be highlighted and stressed upon more, जो आम mainstream media में नहीं होता है. They only speak about price. This is one thing which gets looked upon. ये चीज has caused a lot of ripple in the last few days. Donald Trump ने open threat किया है to BRICS nations and other adjacent countries to US that he will be 100% tariff pledge करेंगे to counter the BRICS currency and to keep the US dollar strong. तो कई सारी चीजें होती है. Donald Trump sometimes he does what he says, sometimes it's just a threat to see कि कौन react करता है, कौन नहीं react करता. And this, it's like an open threat to all these countries. And BRICS छोटी ये नहीं है. It's not a small, was that alliance? BRICS के साथ, BRICS सिर्फ नाम का है. In addition to that, there are several countries who have filed applications to join BRICS. And उन सब पे ये GDP of BRICS is larger than G7. Yeah. अभी recently cover हुआ था ना, it had gone up. हमने cover भी किया था शायद ये. So yeah, BRICS is not a small nation, small group. So obviously Donald Trump and the US administration are threatened by this. That's why ये open threat निकला है. And ये कितना सच होता है, we don't know, but we are seeing patterns of it emerge. Tariffs announce किए गए हैं on Canada, and Canada ने retaliate भी किया है. I think 25% तक का tariff on US imported goods लागू किया है. And joining Canada is obviously Mexico, because Donald Trump has gone against Mexico on imposed tariffs and illegal immigrants को वापस भेजने की बात की है. Gulf of Mexico करने की बात की है. A lot of things have been happening. So this, I feel, will push a lot of people to look at alternative sources of currencies which Bitcoin excels at and which is not controlled by any one nation, at least till now. So this, I feel, is a road to that. And again, all roads lead to Bitcoin over time. But there are caveats to this also, because हम लोग later down the line we will discuss where USDT, which is US Treasuries actually, that is being pushed onto Bitcoin through Lightning Network. इसका, it has its own pros and cons. We'll discuss that. इसके बारे में you have any specific topic? मैं क्या सोच रहा था इसमें कि एक्चुअली जो कल अपना बजट था, तो इसमें डिफरेंट आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है हम पर. तो टैक्स जो चीज़ है फाइनली वो तो जनता से वही है कि लाइक एक तो पहले तो करेंसी डिवैल्यू करो तो हम कहीं और इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट कहीं करते हैं तो वहाँ से में रिटर्न आता है तो उस पर टैक्स लगा लेते हैं. तो मतलब कि एक सेंटर में लोग बैठे वो नहीं चाहते कि जनता के पास पैसा आए, रिच हो जनता, क्योंकि अगर जनता रिच हो गई तो फिर वो रिवोल्ट करने लग जाएगी और फिर उनकी पावर छीन जाएगी. तो जो एक सरकार जो एक अपने सिटीजन के साथ करती है, तो अगर अब बाकी सारी सरकार है, बड़ी सरकार छोटी सरकार के साथ करेगी, सो वही ट्रम्प वही कर रहा है, समझ रहे हो. टैरिफ एक्चुअली वो टैक्स ही तो है ना, तो वो टैक्स इम्पोज कर रहा है क्योंकि उनको भी सर्वाइव होना हार्ड हो रहा है. अमेरिका को तभी तो कर रहा है, उसको सर्वाइव होना हार्ड हो रहा है, समझो ना. उनको वरना क्यों टैक्स लेंगे. एक समय था तो भी वो पावर से ही करते हैं. तो ये फाइनली चीज तो ये चलता ही रहेगा. बट द बेस्ट थिंग इज कि वी हैव बिटकॉइन. सो लाइक अगर हम ऑप्ट आउट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम आज अगर आप बिटकॉइन में आ जाते हो तो भी आप बाहर कुछ चीज लेने जाओगे तो आपको टैक्स तो हर चीज में पे करना ही पड़ता है. बट धीरे धीरे लाइक इफ एवरीवन मूव्स टू बिटकॉइन, ये एवरीवन क्या 1-2-5% लोग भी बिटकॉइन में मूव हो जाएंगे. अभी 0.01% लोग भी नहीं होंगे. लाइक there are statistics के not even 1 million people hold on chain Bitcoin out of
8,000 million of the entire world population. 8 लाख 10 लाख लोग भी नहीं है, 5-8 लाख लोग ही होंगे, तभी बिटकॉइन का भाव $1 लाख है। और बिटकॉइन इज अ वेरी पावरफुल एसेट। तो सिर्फ 1% लोग भी आते हैं ना, अभी तो 0.1%, 0.05, 0.08 समथिंग पॉपुलेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सम मेनी मेट्रिक्स। सो 1-2-5% लोग बिटकॉइन में आ जाएंगे तो ये सारे चीज़ खत्म हो जाएगी। बट मीनवाइल ये टेरिफ और चलते रहेंगे, हमारी करेंसी भी टूटेगी। अगर ये है ना ब्रिक्स में कुछ होता है तो इंडियन करेंसी डॉलर के सामने टूटेगी। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि 100% टैरिफ, राइट। आप ये समझो कि वैसे भी डॉलर की ये जो हेजेमनी है उसके कारण वैसे भी एवरी 10-15 ईयर्स में हमारी करेंसी हाफ तो हो ही जाती है उनके सामने। 1947 में $1 1 रुपीज था, अभी वो 87 रुपीज है ना। 2010 में 40 रुपया था, 2005-7 में 40 रुपीज समथिंग था, 40-45 समथिंग 50, है ना। सो पिछले 7-8-10 साल में 30% टूटा है अपनी करेंसी। सो एनीवे 10-15 साल में 100% टैरिफ लग ही रहा है हमें। तो मतलब एन्युअली उस टर्म्स में देखो तो इतना टैरिफ लग रहा है, और साथ साथ वैसे देखो तो सब लोगों की करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है अगेंस्ट डॉलर्स अपनी इंडियन। तो ये एक साथ हो रहा है, अब तेजी से होगा। सो अब हर कोई लाइक अब ये प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है एवरी कंट्री के पास? हाउ विल दे फाइट? मेक्सिको बोला कि गोल्ड हम भी टैरिफ इंपोर्ट करेंगे। गोल्ड, हाँ गोल्ड, बट ऑब्वियसली गोल्ड। विल कम टू गोल्ड आल्सो। आप बताओ, मैं बताता हूँ फिर आगे का गोल्ड न्यूज़ वही है गोल्ड के बिटकॉइन भी बारे कर सकते हैं, बट मैं कहना चाह रहा था कि वो लोग मैसिवली प्रिंट करेंगे। में। या वो प्रिंट की रेस लगेगी, जितना हो सके प्रिंट कर करके बस एसेट लो और पावरफुल हो जाओ। लाइक द गवर्नमेंट है पावरफुल होना, सरकार भी, अमेरिकन गवर्नमेंट प्रिंट करेंगी, सारी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी। सो ट्रेड वॉर्स जब आएगा तो वो इंसान आम आदमी पे झटका पड़ेगा, तो उनको अब आम आदमी सरकार को बोलेगी भाई कुछ करो, तो सरकार फिर से वही मैसिव पैकेज निकालेगी। अब जैसे ये जो अपना टैक्स में जो 7 लाख की जगह 12 लाख पे जीरो टैक्स कर दिया है न्यू टैक्स रिजाइम, तो हमें लग रहा है कि जो लोगों को लग रहा है अच्छा 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 है। पर आप ये समझो कि पहले पहले 3 लाख पे हुआ करता, 2 लाख पे हुआ करता था, अब ये 12 लाख पे है, 15-13 लाख पे है। तो करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो अभी मैसिव प्रिंट होने वाला है, बहुत मैसिवली प्रिंट होने वाला है। ऑलरेडी 60,000 करोड़ के बॉन्ड बाइंग्स तो होने भी वाली है आरबीआई से, है ना। वो होने वाली है, इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। सो ये या सारा हम आम आदमी पे आना है फाइनली खर्चा। तो हम we can bulletproof ourselves, our money, if we allocate, yeah, if we move to Bitcoin standard। या एब्सोल्युटली। आप बताओ। एंड कमिंग टू हार्ड एसेट्स जो आपने बोला था, हम्म। गोल्ड हैज हिट रिकॉर्ड हाई। एंड मौसम। इसके चलते ना क्या हो रहा है, हम्म। देयर इज हम्म। गोल्ड शॉर्टेज इन लंदन। एंड वहां पे उनके हाँ, रिजर्व्स में सुना था जो भी मैंने। यूएस इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू लंदन, जो भी लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली नॉट स्मॉल वंस, तो दे आर गोइंग टू टेक देयर फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड। एंड कस्टडी, उस टाइम में है ना। इन्होंने अपना टाइम फ्रेम डबल कर दिया है, फ्रॉम 4 वीक्स टू 8 वीक्स। मतलब 1 महीने से 2 महीने का टाइम दे दो, देन वील रिटर्न योर गोल्ड। सो वी आर सीइंग समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन 1971, जहाँ पे वो रिडेम्पशन वाला काट दिया गया था। सो वी आर सीइंग दिस, एंड हम्म। इट्स हैपनिंग ऑन अ वेरी क्या बोलते हैं, हम्म। volatile time when US is going to do things, and that is affecting a lot of other countries in the process. यस। सो मुझे भी एक स्क्रीन शेयर करने दो। हाँ, सी दिस थिंग। हमने हम लास्ट गोल्ड, वीक बात करी थी कि लाइक, सॉरी, हाँ, बताना। हाँ हाँ, कि अगर हम बिटकॉइन को डॉलर के टर्म्स में नापते हैं तो Yeah, वो सही मेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज 2021 में बिटकॉइन जो यहाँ पर 69,000 था, उस समय पे जितनी डॉलर की सप्लाई थी वगैरह, सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप बिटकॉइन का चार्ट निकालोगे ना डॉलर से, तो वो बाइंग वन बिटकॉइन इन 2021 एट 65,000 वाज सेम एज बाइंग वन बिटकॉइन एट $1 लाख। लोगों की सैलरी उतनी हो चुकी है जंप। yeah, सो लाइक अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच भी नहीं किया है, तो मतलब ये कि हम बिटकॉइन को किससे नापे, बिटकॉइन को yeah, हम किससे मेजर करें। सो बेस्ट इज टू मेजर बिटकॉइन अगेंस्ट गोल्ड, है ना। तो right, गोल्ड के अगर हम मेजर करोगे तो देखो उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, उसके बाद फिर से थोड़ा डाउन आ रहा है। yeah, सो yeah, जैसे आपने गोल्ड का चार्ट निकाला ना, सो अगर गोल्ड के टर्म्स में हम 2021 का हाई भी अभी तक पार नहीं किया है,
सो इस तरह देखो तो हम ऑलरेडी लाइक हाविंग साइकिल के अकॉर्डिंग मस्त जा रहे हैं, एंड अब आगे जाके ब्रेक कर सकता है, वी डोंट नो कब करे, राइट। बट या चेकिंग बिटकॉइन अगेंस्ट गोल्ड इज अ गुड मेजर, मुझे लगता है। ट्रू। हम्म। इसके सो चलते या a lot of people are and a lot of governments and banks have been taking श्योरली steps to explore the idea आई of विल डू Bitcoin इट। as the reserve currency. तो ये चेक नेशनल बैंक के जो गवर्नर हैं, इन्होंने प्रपोजल डाला था कि दे विल हैव एटलीस्ट 5% टू allocate in Bitcoin. He is very well aware कि it is very volatile, but he wants to explore the idea in order to again bulletproof their financial condition. ये proposal डाला है and it has been tabled at their committee, and I think the consideration is also ongoing. So we'll see more of this happening, and ऐसा नहीं है कि it'll stop anytime soon. This is just one country. अगर दूसरे country की बात करते हैं तो Norwegian Sovereign Wealth Fund, हमने इसको पहले भी cover किया है. This fund typically is based on algorithmic trading. So the algorithms and bots decide कि कहाँ पे which one is the winner, and वहाँ पे ज़्यादा पैसा allocate होता है. So we have seen almost 153% increase from last year till this year in terms of BTC size allocations. So this is a great thing. But this is obviously paper Bitcoin because they don't directly own Bitcoin. They own it through MicroStrategy and Metaplanet. So almost I think 534 million US dollar तक का they hold MicroStrategy stocks, which is a proxy for Bitcoin. And Metaplanet I think 5 या $8 million का own करता है. We'll see more of this happen, and I think it is happening in the background. Just that उसकी खबर नहीं आती तो लोगों को पता नहीं चलता. So this Norwegian Wealth Fund has an indirect exposure, and how portfolio is being, अच्छे से strong किया जा रहा है with Bitcoin as its core. Now coming to this, there are people who have bought USDT on Bitcoin and Lightning. This has been a very debatable development because इससे क्या होता है, Tether is a US company at the end of the day. They hold US treasuries, and this is exactly what Bitcoin is trying to curb and reduce. And अगर आप उस चीज को USDT को अगर Bitcoin and Lightning पे ला रहे हो, that is not a good sign. And ऐसा इसका opposition भी बहुत है within the Bitcoin community itself. And this is not especially good for the global south. दोनों मतलब there are two thought processes behind this. कि the people who are for USDT, they're telling कि नहीं, global south तो transact तो US dollars में ही करता है. If you go to Africa, they will prefer dollars instead of Bitcoin or sats. So उनका ये कहना है. But Bitcoin developers का ये कहना है कि why rely on US treasuries and the US dollar itself? Starting से ही आप directly do your Bitcoin allocations. But a lot of people do not like the volatility that Bitcoin shares. So that's something a lot of people are skeptical about in the real world, real applications and the markets. So I think this is an ongoing debate and chalta rahega. I see both good and bad in this, because you see a lot of this happen in global south. There are a couple of examples where they accept and they value everything in US dollar terms. They don't do it in sats. Abhi tak wo nahi hua hai transition. So yeah, that's another development. तो ये डॉलर में तो लोग दे विल ट्रेड अभी, लाइक डॉलर की यूएसडीटी की डिमांड भी है ग्लोबल साउथ में, जैसे आपने बोला. देयर आर पीपल हु आर ट्रांजैक्टिंग इन यूएसडीटी बिकॉज वो बिटकॉइन की वोलेटिलिटी से नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए यूएसडीटी ज्यादा है. तो 5-7-10 साल तक शायद रहेगा, बट इट्स गुड कि पहले वो यूएसडीटी पे आएंगे, देन दे विल मूव टू बिटकॉइन. पहले ये टेदर वाले बाकी इथेरियम वगैरह चेन यूज कर रहे हैं. $150 बिलियन का मार्केट कैप है, उसमें इश्यूड है, उसमें फीस भी तगड़ी लगती है. अब ये लाइटनिंग पे दे आर यूजिंग टैपरूट प्रोटोकॉल. या अब उनके पास कितनी सीजर्स पावर है वो मैं आई डोंट नो अबाउट इट. सैंक्शन कर सकते हैं कि नहीं, that is again another topic for discussion, जिसके लिए we You have are trying idea? to find expert who can comment on this, and hopefully we'll have him on the show later sometime in this month or next month जब भी वो free.
So he has worked with Lightning Labs before, so he can give us a better understanding of how things can proceed. But yeah, Rahul, no USDT shitcoin on Bitcoin. It is true, yeah. I mean, I'm not for it as well, but it is better than using other chains. That you cannot deny. आप Tron use करते हो या Ethereum use करते हो through USDT, that is उससे तो better it comes on Bitcoin, right? Like all road leads to Bitcoin. So that way it's good, but otherwise, yeah. But eventually it will die. So like तुम्हें वो जब तक USD की डिमांड है, like see dollar denominated wealth is around 1,000 or 2,000 trillion in the world, है ना? Yeah. Bitcoin is just 2 trillion. वर्ल्ड का Yeah. डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स more than $6 trillion है, Right. इंटरनेशनल ट्रेडर्स सारे. सो अभी ये होगा ही उसमें. when then I think धीरे धीरे डॉलर now one bitcoin will buy you $1 lakh, then $1 million, then $10 million. फिर डॉलर की वॉलेटिलिटी इतनी खराब हो जाएगी कि पीपल विल प्रेफर बिटकॉइन वॉलेटिलिटी बिकॉज इसकी अपसाइड रहेगी, डॉलर की डाउन साइड रहेगी. सो और रुपीज में INR में ऑलरेडी हो चुका है सर, राइट? लाइक सो अगर इफ यू आर इंडियन देन इट इज बेटर टू होल्ड बिटकॉइन देन INR. इजिप्ट और वो कुछ करेंसी में तो उनमें तो 100% है, अपना में चलो चलो शायद इट्स डिबेटेबल. बट अर्जेंटीना, इजिप्ट, वेनेजुएला, नाइजीरिया, उनकी करेंसी वो तो इतनी हर 2 महीने में हाफ हो रही है उनकी वैल्यू. सो वो दे आर हैप्पी विद बिटकॉइन वॉलेटिलिटी, है ना? सो Again, इट विल like डाई इवेंचुअली. इट डाई. लेट्स सी. आपको क्या लगता है? with time, every major currency has its own lifeline. And there is a museum here in Bangalore where they have a history of Indian currencies. मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ. Like I will find a time, I'll go there. I'll try to document it in some form, and then we'll discuss about that as well. क्योंकि I was actually looking कि कहाँ से start हुआ था Indian में. दो कौड़ी and कौड़ी से आना से पैसा, पैसा से रुपया, and I think कौड़ी के बाद में भी there are a couple of कौड़ी के पहले भी था. हाँ. कुछ मिल के एक कौड़ी भी बहुत कीमत हुआ करती थी पहले. Yes. तो वहां से we have come to a point where आजकल सिक्कों की बात ही नहीं होती. Like 1 rupee, 2 rupee कोई देता भी नहीं. It's moved to 10 rupees या 5 rupees maximum. 5 rupees का भी 50 rupees का भी कॉइन आ जाएगा ना, आ जाएगा, आएगा. So that is something that आपकी क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए, every currency has its own lifeline and it will die out eventually, and it will be replaced by a harder currency. And by harder, obviously, it has to be either gold or Bitcoin. Right. So I'd be very happy in a world where people are using and transacting gold coins or silver coins. But again, it has its own portability challenges. That's where Bitcoin comes in. Now, coming to this part. So this is another example. If you save $30 a month, and this is Africa ke liye example, specific to Africa. If you save $30 a month for 5 years, you are making almost 8 times the total amount you saved. So Mary jo hai, she works at Fedi, and इन्होंने अपना like proper case study बनाया है. She saves as an experiment $1 every day in Bitcoin, and she's put out a proper report. And उसके चलते she's derived and come to this conclusion, where if you had invested 8,988.59 worth of Bitcoin for 5 years, that is $30 a month, you would have made 1.16 million Kenyan shillings, 13 million Nigerian naira. देखा नाइजीरिया तो देखो. Yeah. Not even a 1.1 Bitcoin is 13 million. So one Bitcoin around कितना होगा? 130 million. 200 million naira. So you see these currencies. अब जो अभी question पूछे थे, कौन सी currency कैसे हो सकता है? We are seeing, because all of these currencies are heavily dependent on the US dollar. And if you have saved your wealth in something like Bitcoin, you're seeing the developments yourself. अगर आप $30 US dollar में ही save करते, at the end of your 5th year, you would have got $1,800, which has already reduced in value over time, over those 5 years. So this is a good case study which she's actively working on that has to be highlighted. इसके चलते there have been massive developments जहाँ अभी banks को लग रहा है कि okay, we need to come into the scene
and we need to offer customers what they really need. And Powell ने अभी recent meeting में he had mentioned कि on crypto we think banks are able to serve customers as long as they manage their risks, which is a clear indication after the repeal of SAB 121. हमने SAB 121 previous episode में discuss किया है. So FASB, which is fair accounting for Bitcoin, repeal of SAB 121, that is banks can custody Bitcoin, and in-kind redemption of ETFs, where big institutions can go to the ETF providers and tell के हमें Bitcoin चाहिए, dollars नहीं चाहिए. So that all of these three things are giving rise to a lot of institutionalization and bank participation in Bitcoin and cryptocurrencies. अगर आप ये देखोगे, this is a very good example. टेस्ला का इन्होंने अपना recent earnings report share किया है. 26% of their earnings in the previous quarter came from unrealized Bitcoin gains. And these guys have very small amount of allocation into Bitcoin. Same चीज अगर आप MicroStrategy का देखोगे, they are I think 42 times more powerful than Tesla in this regard. And ये numbers आपको देखने को मिलेंगे I think by May when they actually report their FASB compliant accounting. So this is something which needs to be highlighted. And इसके चलते there has been one major development where altcoins have completely decoupled from Bitcoin. So इस time there is not a lot of excitement where you're seeing कि नहीं मुझे ये pump चाहिए, coin का pump चाहिए, वो coin का pump चाहिए, Ethereum is doing this much, Solana is doing this much, वगैरह वगैरह. We're seeing that people are flocking towards Bitcoin ka proxies and Bitcoin ka alternatives because that option is available now. Because of those three things, FASB, SAB 121 ka repeal and in-kind redemption. So for everyone who is thinking of going in the altcoin direction, this is a clear indicator ki which one is a superior coin and superior asset and which direction in the market will choose. So yeah, that's my 2 cents on this. आपका क्या कहना है इस पे? भाविक कहाँ हो आप? Yeah, there is one Abhijit. He is my friend. He has come to chat section. So hey Abhijit, what's up? आपके कुछ questions हैं तो भाविक यहाँ पे आंसर करने के लिए तैयार है. Actually मिलते भी रहते हैं. Amazing, सही है. And he is learning very fast. Nice. Like उनको 1 महीने पहले कुछ zero पता था. आज उनको he is Bitcoin maxi 1 महीने में. And क्रिप्टो की बात करो तो कहते हैं कि शिट कॉइन है सारे. Yeah, I'm sure आपने गाइड किया होगा. हाँ, लाइक उनके क्वेश्चन भी सही है बट लाइक क्वेश्चन होने चाहिए सामने. लाइक वी हैव आंसर्स बट सामने वैसे कोई क्वेश्चन भी तो पूछे और वो समझे तो सही. बहुत लाइक मेरी जर्नी में से मुझे बहुत कम लोग मिले जो इतना जल्दी कैच कर लेते हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. But he is a little bit shy today, but he will join and share his journey some other day. कि कितना जल्दी वो सीख रहा है. Abhijit, and we hope you see the show and आपको अच्छा लगे. Bhavik and I do this almost every weekend, आपको पता ही होगा. And we'll increase our frequency of shows as well. So anytime you have any specific questions, you can feel free to ask here so that everyone else benefits from those questions also. मनोज का भी चल रहा है आज गूगल मीट ऑन बिटकॉइन. मनोज अरोरा की शायद बात कर रहे हैं राहुल. And yeah, I think there was a small course that he was course नहीं कह लो, like there was a GetBit की बात कर रहे थे वो लोग. I think that's one of the coin only exchanges in India that is servicing customers. So yeah, that's pretty much it for this week. There has been a lot happening. And people who are discouraged कि नहीं INR terms में Bitcoin has reached 1 crore per coin. This is the first thing that people tell me. इतना ज़्यादा हो गया है. Do we have some other coins? Do we have some other tokens? I say no. There is a lot of room for growth. This is only the beginning. Look at it, study it, and then take your decision. कि why has it grown to 1 crore? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर ये समझो कि आप एक जेल में हो, है ना, तो
अब बाहर लाइक इतनी फ्रीडम हो चुकी है कि आप ये बोल रहे हो कि यार ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो गई, अब मैं इस फ्रीडम में तो नहीं जा सकता, बट मैं इस जेल में जाऊँ क्या, इस जेल में जाऊँ क्या, इस इथेरियम जेल में जाऊँ, सोलाना जेल में जाऊँ, जियो कॉइन जेल में जाऊँ, जेल में जा रहे हो तुम, लाइक है ना, तुम कोई भी Yeah, बिटकॉइन के लिए तुम कहीं जा रहे हो, तुम जेल में जा रहे हो। yeah, yeah. सो बाहर कितना भी इम्प्रूव होता रहे, सो इट इज नेवर लेट टू गेट आउट ऑफ प्रिजन, कभी भी Right. लेट नहीं है। सो So, 1 लाख yeah, डॉलर है, कब निकलो जेल से, निकलो बाहर, हो सके इतना जेल से निकलो। there was a recent guest that we had spoken to. उनका मानना है कि you know 5-6 साल में, I think by 2032 or 2040, पता नहीं exact हम्म time. He is not into price predictions. तो उनका ये मानना है, obviously it's हम्म based out of Michael Saylor के model, कि within that duration Bitcoin will reach up to 10 crores per coin. तो that विद इन doesn't mean, हाउ मेनी इयर्स, I think it's 10 or 21 years का, यूएस 21 और years. डॉलर्स ही सेइंग Michael, yeah, I mean 10 crore rupees 10 करोड़ in 21 रुपीस years. हाँ, that's $1 million. अगले साल हो जाएगा। Very hopeful. मेरा मेरा काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है। आप कुछ ज्यादा ही बुलिश हो इन द लास्ट फ्यू वीक्स। आई वाज लाइक कूल, ठीक है, आराम से करते हम्म हैं। कोई जल्दी नहीं है। हम्म नहीं क्रैश भी गंदा होगा, बट लाइक या इट या कैन, बहुत चांस है 10 करोड़ पहुंचने का। अभी 1 करोड़ 15 लाख तो अभी पहुंचा था, लाइक या नॉट पीयर टू पीयर रेट पहुंचा था 1 करोड़ 15 लाख। या ऑफिशियल रेट एक 5 था, केवाईसी वाला है, नॉन केवाईसी में लाइक इट वाज ट्रेडिंग एट 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। या सो 10 करोड़ इज, आपको पता है बिटकॉइन 6-7 लाख, 8-8 लाख जाएगा ना, 6-7 लाख डॉलर जाएगा ना, हम्म तभी वो रुपए की टर्म्स में 10 करोड़ में घूम रहा होगा। लाइक वो इतना जाएगा तो रुपीज विल ब्रेक अगेंस्ट डॉलर्स, एंड पीयर टू पीयर मार्केट तो और ब्रेक करेगा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? लाइक पीपल वोंट बाय फ्रॉम केवाईसी बिकॉज उनको क्या क्या रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आगे, एंड दैट हम्म गिव्स एवरीवन ऑप्शन। सो दिस इज ऑल गार्डन वॉल है तो सारे वॉल से बाहर लोग निकल सकते हैं, इजीली कूद सकते हैं, सो कूदेंगे। और जो अंदर रहेंगे उस पे ही तो गवर्नमेंट और सारा जो वो लोग परेशान करने की, टैक्स करने की, उनको ही उन दे विल ट्राई टू मिल्क देम, है ना, उनको ही दोएंगे। काफी सो बुलिश हो आप, भाविक। एक्सट्रीमली रेयर नहीं, टू सी। आई एम कुछ बुलिश नहीं हूँ मैं, इट इज जस्ट बेस के सिनेरियो। सही। बुलिश केस तो मैंने बताया नहीं है। आप वो पढ़ो, लाइक राहुल, आई विल रिकमेंड ग्रेजुअली देन सडनली, पार्कर लुइस के कोई भी आर्टिकल देख लो या फिर बुक भी पढ़ लो, तो ग्रेजुअली देन सडनली, अगर इफ यू नीड इट देन आई आई विल शेयर यू गूगल ड्राइव लिंक, उसमें देर आर उसमें बुक्स है, काफी बुक्स है, तो यू विल गेट दिस बुक। राइट। चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीक। वी जस्ट विल आई सी थिंक यू। अभिजीत इज कमिंग, लेट्स सी, आई थिंक ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, ही इज कमिंग, अभी आ रहे हैं? यस ही इज कमिंग, ही विल शेयर हिज ऑडियो ओनली। ओके, ठीक है, कूल। विल वेट फॉर हिम। बिकॉज उसका इनका न्यू न्यू एक्सपीरियंस है ना, सो ही विल, इट विल हेल्प लॉट, जो जो भी नए लोग बिटकॉइन में आ रहे हैं उनके लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत ही लाइक इट्स अ गोल्डन एक्सपीरियंस फॉर देम, ओके। कि कैसे क्रिप्टो से दूर रहना है। हम्म ही इज जस्ट कमिंग इन 2 नहीं, मिनट्स। we can have him come on the show separately as well, थोड़े टाइम के लिए। We हाँ। have our upcoming show very soon, हम्म in हम्म by Tuesday or Thursday, I think. So उस टाइम पे भी हम्म अगर वो फ्री हैं, then we can do that. देखते हैं, या आई थिंक थोड़े कैमरा शाई है, अभी इनको बोलेंगे नहीं, वही, बट वीडियो में तो आई डोंट थिंक अभी वो आएंगे, इज कमिंग no, इन ऑडियो। even the audio bit, ताकि अगर if he's not free, तो we can, या or is ये that, स्कैम, ठीक है, whenever you're ready, Abhijit, I will आपको call भी, you. you just need to connect your audio, you can also join for from phone also, फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक क्लिक कर दो जस्ट फोन से, यू विल बी एबल टू। व्हाट वाज द लास्ट न्यूज़ जो आपने कवर किया, और मेरा आई वाज टॉकिंग विद अभिजीत। I think वो टेस्ला के earnings is what we were talking हाँ about. हाँ, एफएसबी वाला ना, से साब 21, हाँ तो वो काफी बुलिश रहेगा, Yeah. बुलिश ही रहेगा।
MicroStrategy को काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं. We encourage you to learn about it and what is the game plan of Michael Saylor. There are a lot of replicas. एक Genius Holdings Corporation करके एक है. उसके चलते they have decimated themselves in the last couple of things. They've over leveraged. So a lot of companies adopting the MicroStrategy playbook will not succeed. So you need to be very careful with the whole leverage situation, which MicroStrategy has a robust knowledge of. उनकी पूरी dedicated team है to do this. So I'm sorry, Saurabh, but not now. We'll be doing a session soon where we can call Adi, and I'm glad he asked, and काफी late हो चुका. I think we are towards the end of our show, so we've covered a bit of. सेपरेट करना चाह रहे हैं ना हम, लाइक डेफिनेटली एक सेपरेट या तो फिर डेडिकेटेड या तो फिर No, पहले शो में थोड़ा he means now अभी बुलाने का, but now I think we are close to the end of the show, तो अगली बार बुलाते हैं. Like towards the week, I think Tuesday or टुवर्ड्स द Thursday. बिगिनिंग है ना, वो अच्छा रहेगा. वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आए तो बढ़िया रहेगा. And I think he's also he doesn't want to come in front of the camera, तो वो भी अपना audio बोलेंगे. He's the creator basically. Adi, for those who are not aware, he is the person behind Summer of Bitcoin initiative, and he is very vocal about getting a lot of developers and designers to contribute to Bitcoin. People are extremely enamored by. Let's continue. पक्का आपको Rahul is no fine. No. Rahul, अच्छा, like, ठीक है. yeah. I thought you had to go somewhere इसलिए. No, fine. I have shared link with Adi just now. Sweet, ठीक है ना? So if you also said, I have shared him with on Twitter only. So we are getting Adi on the call या Abhijit on the call. I think Abhijit has some browser issue. So I think he won't be able to connect. ठीक है. Let's invite Adi. Cool. Adi का we'll have a quick catch up. And उनके साथ proper dedicated show करना है where we want to understand his journey also on how he started. But this is, I think, mainly about Summer of Bitcoin का initiative which just started yesterday, and 15 दिन है for anyone who's interested. That's why time is of the essence. So that is इसलिए मैंने भी उनको yesterday approach किया था. I think he was busy with weekend चल रहा है तो. Do you have personal contact of Adi or should I share with Setu? I think so. मैंने ट्विटर पे भेजा है उनको आदि. I don't have personal connection with Adi. So मैंने सेतु को भेजता हूँ. सेतु will share with Adi maybe. काम तो है, मुझे जाना तो है कहीं पर, बट शो में इतना अच्छा है तो उसे हाउ कैन आई लीव इट. Rahul, what is your price target? मेमपूल खाली हो गया भाई पूरा. $200K. Yeah, this is the common consensus. अगर आप देखोगे ना that whole power law वगैरह, power law की टीम जो है, what's his name? Giovanni. हाँ तो वो है. Then there's Plan C, and then there is उनका नाम याद नहीं आ रहा है. अभिजीत का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बार-बार. He is coming but there is some browser issue. So कोई नहीं, अभिजीत will call you यार. Don't worry. We are here. हम कहीं नहीं जा रहे. हम लोग आपसे like we will talk to you, and whenever your connection is fine. अभी के लिए I don't think it will be possible. So the 200K, yeah, it is very likely a lot of real क्या बोलते हैं application, I mean analysis and conservative कह लो, it is practical that it might happen.
एंड ये 1 मिलियन पर कॉइन वगैरह है, इट्स मून बॉय थियरी अभी तक तो, एंड वेरी अनलाइकली दैट इट विल, अगर होता है भी है तो इट माइट हैपन फॉर 1 वीक 2 वीक्स एंड देन वो कोट एंड कोट क्रैश भी होगा. So again, these are purely speculation and predictions. It doesn't mean कि आप YOLO कर दो and put all your money in this. It is not advisable. We forgot to add our disclaimer, a weekly disclaimer, which is very important. It is extremely risky at the end of the day, but you have to do your own study to arrive at a conviction level, and then you can build your. तो mempool खाली होने वाला है in 10 minutes, and there are not तो enough. रात को भी हुआ था, कल भी रात को हुआ था. Yeah. सी खाली ब्लॉक्स आए तो थे. नहीं दिख रहे क्या इसमें? ये क्या है? स्पाइडर पुल. स्पाइडर कौन सा पुल है? सोलो पुल है क्या? No idea. Rahul, क्या कहना है? Shitcoin season is now came to an end this year. ये वो खाली ब्लॉक है ना? I think so. हाँ, हमने ये डिस्कस भी किया था ना. ये people are now allocating less to other altcoins and they're moving to proxy Bitcoin companies. So traditional markets में आपके regular stocks, US stocks जो हैं, who are adopting Bitcoin, they will be considered as the new shitcoin. सब लोगों का मॉडल अच्छा नहीं होगा. There are 3-4 companies who have joined. I think KULR एक कंपनी है, and then there is another renewable source of energy की कंपनी NWVE, उनका stock ticker है. So these are companies who are dipping their toes trying to understand what this is. NVEE का मैंने देखा था, and at one point they went IPO in 2000 or 2001. उस टाइम पे उनका stock price was $8,000. And abhi it's running at $2. So that's weird. कौन सा वाला? मैंने शेयर किया था ना, एनवी वाला, एनयू कुछ, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड वाला, व्हीकल टू ग्रिड. फी बिलो 1 सेट पॉसिबल. इसका बताओ. बोलो आप बोल रहे थे ना कि इट इज पॉसिबल अगर आप अपना नोड चला रहे हो तो. हाँ पॉसिबल है, बट ये कि आई थिंक आप जब नोड चलाते हो ना तो आपको लाइक यू कैन सेट द फीस. सो बिलो 1 के नीचे कोई प्रोपेगेट नहीं करता, तो अभी कोई नोड वाला प्रोपेगेट कर भी सकता है. तो ट्रांजेक्शन प्रोपेगेट होना चाहिए. तो लाइक इफ यू हैव, यू आर रनिंग योर नोड, यू प्रोपेगेट फ्रॉम योर नोड, और उसके बाद अगर कोई भी माइनस उसको लेता है तो ठीक है. बट अभी वो तभी लेगा जब मेमपूल खाली होगा, है ना? आई थिंक Adi is here, so I think we should, no? Sure. We should add him. बुलाते हैं. I'll just call him. Hey Adi. Hi Adi. Hey Nihal. Hey Bhavik. Hi. Nice to meet you. How are you? After a long time. How have you been? कैसे चल रहा है? Yeah, it's been a while. I think we last spoke about, was it last year? I think it was the year before, 2022. Man. Wow. Okay. Yeah, time flies. All good. Hi. How are you guys doing? Big all fan well. of your show. Thank you so much. Thanks for tuning in and accepting this request at a very short notice. We wanted for you to cover this particular thing because this is your baby per se, and it has grown into something which is amazing, and it's contributed, it's helped a lot of people enter Bitcoin through this and learn about it rather. So we have covered a bit of this, and we wanted you to share a few things about the initiative and the ongoing application process. So would you like to share your screen, or should I do it? You can do it. I don't have I'm on my phone right now. Okay, cool. Let me just share the screen now, and you can send me a bit of. Yep. So you can just simply go to our website and we can start there. Yeah. So at a high level, Summer of Bitcoin is a summer internship program on Bitcoin, as the name suggests. If you are a university student, you are studying computer science, or you
learning about UX, this is a great program for you. If you want to learn about Bitcoin, if you want to contribute to Bitcoin open source projects and earn Bitcoin as stipend in the end. So the way it works is, as you can see on the screen, we have an application process that just started yesterday, and the deadline to apply is until 15th of February. So once you apply, we basically go through your application, we screen it, and then based on all the information that you have shared with us, primarily your programming or open source experience or design experience, we filter you into our learning bootcamp. Now, this learning bootcamp goes on for about a month until the mid of March. This bootcamp is where you essentially learn the ins and outs of Bitcoin. So this is a hands-on bootcamp, and each week, you're given a set of resources to read and study, and also a coding challenge that you have to solve, based on which you progress to the next week. And then once you're through the boot camp, you enter the proposal round, which is the meat of the application process. So we will publish project ideas from different open source organizations and projects in the Bitcoin ecosystem. These could be, features in each of these open source projects, or it could be, building out, writing tests, for these projects. It could also be something experimental that these projects would like to have, as part of their software. So various different kinds of diverse project ideas that these projects propose, and we publish them on our website. What the candidates have to do is to actually submit a project proposal based on one of these ideas. And what does that proposal look like? As I would encourage candidates to look at the student guide, where we have good examples of what a good project proposal should look like. Based on this proposal, you are essentially selected by the open source projects themselves. So each open source project, not only do they provide project ideas, but they also provide mentors who will essentially guide you through the entire summer as you work on your project proposal. And these are also the same mentors who actually review project proposals and select candidates ultimately. So that's where the application process ends. Once your project proposal is selected, you're accepted into the Summer of Bitcoin internship program. And the internship runs for about 12 weeks, from mid-May to mid-August. And throughout the project, you're essentially working under the guidance of the mentor and the rest of the project members. There are evaluations that we hold. So there's a midterm evaluation that happens somewhere in July, and then there's a final term evaluation that happens at the end of your internship program after August 15. And these evaluations basically are mentors reviewing the work that you have done so far. And once you have successfully completed your project, that's when we announce results, and we give you a stipend. So the stipend essentially is paid in two parts, by the way. One is after you pass the midterm evaluation, and the other half is when you pass the final evaluation. And after the program ends, you get a certificate of completion, you get the whole stipend, you get some really nice Bitcoin swag that I'm very proud about, that I know a lot of alumni likes to flaunt when they wear it out, whether it's in their university or any conference. And you might also get, this is sort of, I think, the swag from last year. Thanks for pulling it up. Some really nice goodies. Some of them who performed exceptionally well in the past have also received a Bitcoin miner. So the post before the one that you shared, this was an actual real Bitcoin miner that Pawan,
who was our Summer of Bitcoin 2023, I believe, candidate. He got, and he's running this miner. A couple of others got this as well. So this is a home miner that you can run. And interestingly, some members of this mining community actually have even mined a Bitcoin. So although it's sort of the rarest of rare cases, but who knows? You might get lucky. So yeah, this is one of those posts where somebody actually mined a Bitcoin using one of these Apollo devices. So Awesome. yeah, Beautiful. Thank you for taking us through that. We covered it on a high level basis, but you have given a proper breakdown of what the students can expect and how the whole process looks like. Sure. We would actually like you on show to talk more about the developer scene and on about how you want, where do you see this going? Because there's a lot of commotion regarding the price, and especially in India, we talk more about the price action and less of the active developer community, which is extremely important and required. We need a lot of developers from India working on Bitcoin. So sometime in the future, whenever you're ready, let's have you on show to discuss more about it. What do you say? Yep, absolutely. Happy to talk about anything I can talk about. Thanks, Adi. Anything else you'd like to share for our viewers who are watching this specific? It could be either Summer of Bitcoin or in general your thoughts over the, because it's been a while since we chatted as well. I'm sure you would have there's a lot happening in the Bitcoin space when it comes to the mainstream adoption, when it comes to the developer side of things. Do you have any two cents to share? I mean, what can I say? It's been such a long journey for me too in the Bitcoin ecosystem. And just to see where Bitcoin has come, I think the 100K number, rightfully, as people talk about the price. I think the price is, even though it's the most interesting, but also the least interesting part of Bitcoin, right? So it's sort of a very it's a fascinating idea. Without its price, Bitcoin is really nothing. But without all the other things apart from price, there's no price, to justify for Bitcoin. And so the 100K milestone in that sense, I started when perhaps Bitcoin was in I think high 3 digits or something, and then 10,000 seemed like a crazy number, and now to have it reach across the 100,000 threshold really kind of it's basically, it proves that it is worth something, that it's not a bubble. Even if it keeps going down again and again, it does keep going up because turns out some people do value it. And so when the free market values something, I think people should pay attention, and people are paying attention. And so this was a great year. This is going to be a great year. 2024 was a great year in terms of crossing this milestone. In terms of, again, the price basically is followed by a lot of frenzy, but also a lot of people starting to pay attention. And so you have regulators around the world, as you guys keep discussing, talk about Bitcoin positively. So we have a lot more people who are now decoding what Bitcoin actually is and separating it from the others, and realizing why it's worth what it is worth. So yeah, it feels like we have come so far, and yet there's still so much to cover. I mean, what is it like? How many people actually have Bitcoin? It's I think it's abysmally small. How many people understand Bitcoin? That size is even smaller. And so we've got many more decades to go, I think, in terms of this particular thing maturing and finding meaning in everyone's lives. Right. Beautiful. In any there's been a lot of growth in terms of education as well, and the whole developer scene has expanded from 2020 till now.
from the last bull run to this bull run. And what I think and what we personally feel, with every bull run, there are a lot of curious minds who join this only for the price action, and then there are other people who join it only for the tech and price action. Of course, like you said, price action is the secondary aspect of it. So, do you see any initiatives that you are curious about that you would like to, probably explore across the world in addition to Summer of Bitcoin? Actually, yes. I mean, there's so much more to do, and basically learn from how other technologies have been adopted in the past. In terms of people who are coming in for the tech, there's way too many developments happening. The problem with Bitcoin is that it works differently. One, it's open source, and it's also to an extent decentralized in terms of the its development process is so slow and so at times chaotic. And these are features, by the way. Having the development process as slow is actually good for Bitcoin. Having it chaotic is also good for Bitcoin in the sense that it invites diverse views. It invites a lot of debate, which basically strengthens it. So it's very different from other technologies, and a lot of people have a hard time understanding it. But then it's the scene is so much better in terms of education, as you said, that even the people who are actually coming in to learn about the tech, they have so many resources to understand how Bitcoin works, why it works the way it works, why is it slow, how is it decentralized, and how do you actually make a mark and start contributing to all the different aspects of Bitcoin, whether it is the base layer, the Bitcoin protocol itself, or whether it's basically mining software, or you graduated to kind of higher layers on top of Bitcoin, such as Lightning and other layer 2 solutions. So there's so much to work on and so much to learn about, and thankfully there are more and more resources coming about every day that can help anyone who's just getting started. Awesome. Thank you for your time and appearing here on a very short notice. We will do a proper elaborate show covering many other things that we'd like to address and talk to you about. Because we have a lot of questions about your ordinals and the recent USDT coming on the Lightning network and more such things. So we'd like to get your opinion on that as well. Absolutely. Yes. Let's chat again sometime. Sure. Yes. Thank you, Adi. Bhavik, I'm sorry, आपको कुछ पूछना था आदि से? On a dedicated episode, because I have many questions regarding Bitcoin tech and So Adi, we'll talk, and thank you for coming in the very short notice. Thank you so much for having me. Yeah, thank you, Adi. Thanks guys for tuning in. अगले हफ्ते मिलते हैं. We will see you mostly on Tuesdays, and after that we will let you know. And हमारा structure of the show is reducing. I mean, sorry, it's expanding and reducing at the same time. So we'll keep you posted about it. And there are many different types of shows coming now. On the channel. Different formats. Different formats. Chali, that's it for this week. Thank you very much, Rahul, for staying through the episode, and Saurabh for pulling in Adi at the last moment. And Abhijit, we'll see you sometime next week. And King Forever. Thank you, King Forever. Thank you. Thanks, guys. See you next week. Okay, thank you. See you next week. Take care.